Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 53, Text number 2. Shrimad Bhagavatam, Skand Sankhya 10, Adhyay Sankhya 53 और श्लोक संख्या 2. Shri Bhagavan Vacha Tataham Apetachchito Niram Chana Rabe Nishi Viraham Rukmina Dveshan Mamodvaho Nivaritaha. Shri Bhagavan Vacha Tataham Apitashito Niram Chana Rabe Nishi Viraham Rukmina Dveshan Amodvaho Nivaritaha. Shri Bhagavan Vacha Tataham Apitashchito Niram Chana Tabe Nishi Viraham Rukmina Dveshan Namo Baho Nivaritaha. Next. Vaishnavis. Shri Bhagavan Vacha Dhamma Pikashchito Nirakana Rabeshi Viraham Rukmina Dveshan Translation. The Supreme Lord said, just as Rukmini's mind is always fixed on me, my mind is fixed on her. अनुवाद. भगवान ने कहा, जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा है, उसी तरह मेरा मन उस पर लगा है. I can't even sleep at night. मैं रात में सो तक नहीं सकता. I know that Rukmini, out of
out of envy, has forbidden our marriage. Rukmini's brother, Rukmini. मैं जानता हूँ कि द्वेषवश रुक्मी जो रुक्मिणी जी के भाई थे has forbidden our marriage. ने हमारा विवाह रोक दिया है. So let us recite the Guru Pranams, please. Om Krishna Padaya Krishna Prasad Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे Om Ajnanatirmidasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगणगणान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विषयमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वज्रकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura-bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatam Vyasam Tato Brahma Nasya Pradesho Bhaktishu Nityam Bhakti Sevaya Bhagavati Purana Bhakti So this day, it's Vaishakha Ekadasi, today being the Dwadasi after Vaishakha Ekadasi. On this Dwadasi day, Srimati Kunti Devi appeared. तो आज जो है वो वैशाख मास की एकादशी के उपरांत द्वादशी का तिथि है जिसमें रुक्मिणी जी का आविर्भाव हुआ था. इसको रुक्मिणी द्वादशी में बोला जाता है. So like all the exalted personalities, whether Vishnu Tattva or whether Sakti-Vesh avatars, the empowered jivas, तो जितने भी महान व्यक्तिगत रहे हैं जैसे विष्णु तत्व हो या उनकी शक्ति के अवतार हो या जीव तत्व हो, they have nothing to do with this material world. उनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं. Rukmini Devi is the eternal consort of Lord Sri Krishna. तो रुक्मिणी जी भगवान की नित्य पार्षद हैं, नित्य संगी हैं, नित्य What is a pastime? She appears on earth as the daughter of King Bhishmaka. तो वो लेकिन इस भौम लीला में राजा भीष्मक का पुत्री के रूप में उनका जन्म होता है. The Shastras, the Bhagavad Purana, 10th canto, 52nd chapter is describing. तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है 10वें स्कंद और अध्याय संख्या 52. Oh, here among the Kurus, the Supreme Lord himself, Govinda, married King Bhishmaka's daughter by Vaidarbhi Rukmini. सुखदेव गोस्वामी परीक्षमा से कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जो कि भीष्म की पुत्र थी उनसे विवाह किया. Who was a direct expansion of the goddess of fortune. जो कि स्वयं लक्ष्मी माता का विस्तार. Again, there's discussion. The Orgasiddhas were overjoyed to see Krishna, the Lord of all opulence, united with Rukmini, the goddess of fortune. तो रुक्मिणी जी जो कि लक्ष्मी थी और स्वयं भगवान जो सभी ऐश्वर्य के स्रोत हैं उन्होंने विवाह किया. These are all quotations from the Srimad Bhagavatam.
means the devotees are doing their homework. The devotees are placing these shlokas on the net, not non-devotees. तो भक्त लोग जो हैं इसी का प्रचार कर रहे हैं, खासकर इंटरनेट पे ऐसे श्लोकों का प्रचार कर रहे हैं। Also mentioned in the Mahabharata Adi 67:156. तो महाभारत आदि पर में भी इसका वर्णन है that a partial expansion or a portion expansion of Lakshmi Devi appeared on earth as Rukmini in a family of Bhishmaka. जिसमें ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मी जी का एक अंश विस्तार जो है रुक्मिणी जी के रूप में राजा भीष्म के परिवार में उनका जन्म हुआ एक लड़की। So Rukmini Devi, the queen consort of Hare Krishna, is a Swarup Shakti or Mula Prakriti, the essential potency of Krishna. तो भगवान के स्वरूप या मूल शक्ति जो है वही रुक्मिणी जी हैं, जो कि उनकी नित्य भार्या हैं। She is the queen mother of the divine world, Jagadatri, in Vaikuntha and on Dwarka. She was born in Haridwar and a royal prince from Vedic Aryan tribe, the daughter of a powerful king, Bhishmaka. तो उनका जो जन्म है वो हरिद्वार में हुआ, सभी ऐश्वर्यों के बीच में राजा भीष्म के घर में। It is also described in the other shastras, Upanishads even, अलग शास्त्र उपनिषद में भी इसका उल्लेख है that Lakshmi is Vishnu Shakti or power of strength. So even a Rukmini is Krishna's strength. तो जैसे लक्ष्मी जी भगवान की शक्ति हैं, वैसे ही रुक्मिणी जी भगवान की शक्ति। So there's a distinction between Rukmini and Radharani. तो एक भेद है रुक्मिणी जी में और राधा रानी में। Radharani is strictly and Braja Ras. तो राधा रानी शक्ति से बोले तो ब्रज रस में स्थित है। Rukmini is strictly in Dwarka Ras. और रुक्मिणी जी द्वारका रस में स्थित है। Dwarka Ras means Aishwarya Bhav. द्वारका रस का मतलब उसमें ऐश्वर्य भाव ज्यादा होता है। Formality. उसमें औपचारिकता ज्यादा होती है। Because Krishna took the role of a king practically. He was not officially the king, but he was the supreme controller and Dwarka. के यंत्र के समान। So this Dwarka Ras is substantially different from Braja. तो द्वारका रस ब्रज रस से बहुत अलग है। In Dwarka, everybody knows that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. द्वारका में सबको पता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान ही है। He's holding court in his very special palace, meeting room, or palace, a special open area in the palace for darshan with the public. They could come. तो भगवान जब द्वारका में थे तो उनके ही राजमहल में विशेष सभा होती थी, जो कि खुला एक सभा होती थी जिसमें हर कोई आके भगवान के दर्शन कर सकता। So he would join in with Maharaj Yudhishthira practically in the administration. तो महाराज विष्णु के साथ जो भी प्रबंधन कार्य में वो साथ इकट्ठे करते थे। Practically, Maharaj Yudhishthira was just carrying out his orders. अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो महाराज युधिष्ठिर उनके ही आदेशों का पालन करते। And the other members of the Yadu dynasty, they're all devotees of Vasudev Krishna. और जितने भी बाकी यदुवंशी थे वो वासुदेव कृष्ण। So you have to understand that in Dwarka Leela, Krishna is Vasudev. द्वारका लीला में कृष्ण वासुदेव के रूप में होते हैं। He doesn't show his form except on special occasions, perhaps. तो हालांकि वो वासुदेव कृष्ण है, लेकिन अपने चार भुजाएं नहीं दिखाते। कुछ विशेष लीलाओं में उसको छोड़कर वो दो भुजाओं के रूप में रहते हैं। Known as Vasudev. और उनको वासुदेव कहा जाता है। Krishna, the flute player in Braj, जो बंशीधर कृष्ण हैं, जो कि व्रज के हैं, he's not ultimately a demon killer. वो असुरों का संहार नहीं करते। Lookalike expansions, they do this killing business. तो उनके बिल्कुल रूबहू जैसे विस्तार हैं, वो ये काम करते हैं असुरों का वध करने। That is known as Vasudeva Krishna. और उनको वासुदेव कृष्ण बोलते हैं।
So the Aishwarya Bhav of Dwarka is Vasudeva Krishna. जो ऐश्वर्या भाव है द्वारका का उसमें वसुदेव कृष्ण रहते हैं। It is said that he doesn't play on the flute in Dwarka and he doesn't have a peacock feather in Dwarka. क्योंकि ये कहा जाता है कि द्वारका में ना वो मोर पंख लगाते हैं ना वो वंशी धारण करते हैं। We can't imagine Krishna without peacock feather. तो हम कृष्ण को ऐसे देख नहीं सकते कि जिसमें उनका मोर पंख ना हो। Because we are in the line of Caitanya Mahaprabhu. क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में। So naturally, everyone in the line of Caitanya Mahaprabhu is attracted towards Braj. तो चैतन्य महाप्रभु के जो भी अनुयायी हैं वो ब्रज के प्रति हमेशा आकर्षित रहते हैं। Of course, even in our society, devotees, there are some devotees who are attached to the Aishwarya conception. हमारे लेकिन संस्था में भी ऐसे कई भक्त हैं जो कि इनको ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। But mainly, most devotees know that we're headed to Braj by the mercy of Prabhupada. Why? Because he's an eternal resident of Braj. That's why everybody in our society is heading towards Braj. Unless you're really stubborn and want to go to some place where Krishna is worshipped in Aishwarya formality. तो मैं बता रहे हैं प्रभुपाद जी के पास हमारी संस्था में जितने भी भक्त हैं चाहे वो किसी से ऐश्वर्य भाव से आसक्त हुए ना हो प्रभुपाद जी के पास से वो सब ब्रज की तरफ जा रहे हैं। उनको छोड़कर जो कि बहुत जिद्दी क्यों ना हो कि नहीं मुझे ऐश्वर्य रस में ही स्थित होना है मुझे ब्रज नहीं जाना है वो ही छूटेंगे बाकी सब जाएंगे। I asked Madhurya Prabhu, who is one of ISKCON's best pundits. तो मैंने ये चीज़ माधवन प्रभु से पूछा था जो कि ISKCON के बहुत बड़े पंडित हैं। If a devotee in our society or anywhere is transcendently obsessed over Lord Shri, for example, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि हमारी संस्था में या बाहर कोई भक्त अगर वो मतलब आध्यात्मिक स्तर से नरसिंह भगवान के प्रति आसक्त है to say that Lord Shri was in the mood of Braj would be rasabas. तो क्योंकि लेकिन नरसिंह भगवान ब्रज में नहीं है क्योंकि वो ब्रज भास मतलब रस भास हो जाएगा। Rasabas means incompatible mellows. रस भास मतलब कि जो है वो रसों के बीच में Can anybody mentally imagine? नहीं है या उनके बीच में मेल नहीं तालमेल ठीक है। Can anyone mentally imagine Lord Shri appearing in Braj? तो कोई शायद इसका मनन भी नहीं कर सकता कि नरसिंह भगवान ब्रज में प्रकट हो रहे। Actually, here we see that even when Krishna was killing demons, he was not in the mood of Lord Shri, not exactly. तो हम यहाँ भी देखते हैं जब ब्रज में भी भगवान ने कई असुरों का वध किया तो नरसिंह रूप में उनका वध नहीं किया। He's just having fun. बस मस्ती मस्ती में उनका वध करके। And the coward boys, they cheer him on. और जो ग्वाल बालक थे वो भगवान का जो है जय जयकार करते थे। Yeah, that was great. Hit him a left punch, boom. Okay, great, wow. Now right punch, yeah, woo. Oh, that was really cool. Okay, go in the bam. Okay, yeah, woo. Go, yeah, wow. This is coward boys. तो ग्वाल वाले जो है बहुत मस्ती लेते थे और कहते नहीं भगवान आप अपने दाएं भूसे से मारिए नहीं अब बाएं भूसे से मारिए अब लात मारिए अब उसको पटक दीजिए तो भगवान के साथ। Prahlad Maharaj's relationship with Lord Shri is Aishwarya Bhav. लेकिन प्रहलाद महाराज नरसिंह मान से ऐसे नहीं संवाद करते उनका ऐश्वर्य। In his own words in the Bhagavata Purana, Maharaj describes that he is in Dasya. Dasya, Prahlad is in Dasya Rasa. वो खुद कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि प्रहलाद महाराज जो है दास्य भाव में। He wants to be the servant of Lord Shingadev, and the relationship is with some formality, even though Lord Shingadev is always very affectionate for Prahlad, like a father. तो प्रहलाद महाराज जो है खुद कहते हैं कि नरसिंह भगवान के दास के रूप में रहना चाहते हैं लेकिन नरसिंह भगवान का बहुत स्नेह है प्रहलाद के प्रति। Practically, Lord Shingadev was the real father of Prahlad. तो व्यवहारिक रूप से देखें कि नरसिंह भगवान ही वास्तव में प्रहलाद महाराज के पिता थे। Madhurya Swami describes, and don't ask me where he got it from, I only can say that he declared here in Punjabi Bhag actually that after being pacified by Prahlad, Lord Shingadev licked the top of his head with his tongue. I mean, he has a cat body, and cats, what do? They lick their kittens. तो भानु स्वामी महाराज यहाँ पंजाबी बाग में एक बार प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जब नरसिंह महाराज ने अपनी प्रार्थना खत्म की तो प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थना खत्म की तो नरसिंह ने अपनी जीवा से प्रहलाद के सर को चाटा क्योंकि वो एक सिंह रूप में है
he was in a jolly mood, so then he's feeling parental towards Prahlad, who is surrendering unto him like a kind father. वो एक प्रसन्न मुद्रा में है और जैसे उनका अंदर वात्सल्य भाव है प्रहलाद को देखकर, तो वो उस वात्सल्य भाव को प्रकट करते हैं. Now, Madhuswami points out this way, every incarnation of the Lord tastes some kind of rasa. तो भानुस्वामी महाराज बता रहे थे कि हर भगवान का अवतार एक अलग विशेष रस का आस्वादन करता है. So here, Lord Nrsimhadev, we see in the end, after he's mesmerized, he's assuming a parental ras. तो यहाँ नरसिंह भगवान जो है वो वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं. Like a mother cat. जैसे एक माँ सिंह या एक मादा सिंह करेगी. So in this way, the different expansions, Vasudeva, Krishna is doing different activities. Of course, Lord Nrsimhadev also expansion of Lord Vishnu. तो नरसिंह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और वो वसुदेव कृष्ण इस तरीके से अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं. और नरसिंह भगवान उन्हीं वसुदेव कृष्ण के विस्तार. All those expansions are coming from Krishna. He's the original. और ये सब अवतार जो है वो जो मूल अवतारी हैं कृष्ण से आ रहे हैं. That's why we're saying Govinda Madhurya because he's Lord Brahma is declaring that Lord Sri Krishna, Sri Krishna, the fruit bearer, is the original. तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम जाने कि जो आदि पुरुष है सभी अवतारों के जो स्रोत हैं जो अवतारी हैं वो स्वयं गोविंद कृष्ण. So try to understand this concept of Vasudeva Krishna. इन वसुदेव कृष्ण के आप इस संबंध ज्ञान को समझिए. He's a lookalike. He looks just like Krishna. तो वो भगवान के बिल्कुल एक जैसे लगने वाले हैं. But his mood is different than Braj, certainly. लेकिन उनका जो भाव है वो ब्रज भाव नहीं है. Can anybody imagine the soldiers of the Kshatriyas of Dwarka being present in Braj? Can anybody imagine that? तो क्या ये सोच सकता है कि जो द्वारका के जो सैनिक थे, जो क्षत्रिय सैनिक थे, वो ब्रज में कोई लीला में भाग ले? What do you think, Vishnu Mahan? विष्णु महान प्रभु आप Could the powerful Maharatis of Dwarka, the sons and grandsons of Lord Krishna, could they be present in Braj? He's also Bhaktivedanta. His name is Vishnu. Vishnu Vahan, he is the carrier. Yeah, Vishnu Mahan. No, they cannot be. He prompted you? I'm just joking. तो महाराज ये प्रश्न विष्णु महान से पूछ रहे थे और विष्णु महान को इसका No, this is rasa. नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है. Yes. Try to understand, rasa doesn't just mean Krishna dancing with gopis. तो ब्रज रस का मतलब होता है कि भगवान का गोपियों से जो ब्रजवासियों से उनका आदान प्रदान. That's only one aspect. It's perhaps the most famous aspect of rasa of Krishna, Govind and Srimati Krishna dancing with gopis, young girls. And they're very young. और ब्रज रस का जो मुख्य रस जो है वो माधुर्य रस है जो कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ उसका अनुस्वादन करते हैं. Any paintings where Krishna looks 30 years old when he's engaged in rasa are not bona fide. They are. तो महाराज बता रहे हैं कि अगर हम कोई चित्र देखें रासलीला के जिसमें भगवान जो है वो 30 वर्ष के कुछ तो वो जो है वो सही नहीं है क्योंकि भगवान ने रासलीला छोटी सी उम्र में किया था. Srila Prabhupada's all-time favorite painting by his artists of Rasa Leela hangs on his wall in his room in Los Angeles. तो प्रभुपाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध एक चित्र था यही रासलीला का जो कि उनके कमरे में लॉस एंजलिस में लगी हुई. In that painting, Krishna and gopis are visibly 6, at most 7 years old. तो उस चित्र में आप देख सकते हैं कि कृष्ण और गोपियों सबकी उम्र 6 साल, 7 साल, 8 साल. So when artists speculate that he looked 30 years old, it's way off. तो जब चित्रकार ये उनका विचार अगर वो विचार से बनाते हैं और कृष्ण को 30 साल का एक पुरुष दिखाते हैं, मर्द दिखाते हैं तो वो ठीक नहीं है. So Braja Leela and Dwarka Leela, that is two things altogether separate. Although Krishna
and Rukmini are connected to it as expansions toward expansions. तो ब्रज लीला और द्वारका लीला में बहुत भेद है और रुक्मिणी जी जो है वो द्वारका लीला में भगवान की रानी है. So in these pastimes, the Lord and his consort appear in families like Rukmini appeared as the daughter of a king on this planet. So they appear to be coming through material bodies, but it's not the same as regular human beings. Certainly not. Rukmini ji. Yeah, the appearance of Krishna also we know. तो हालांकि हम रुक्मिणी जी को अगर देखें उनके बारे में पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने भी वैसे शरीर लिया है जैसे हमारा शरीर, लेकिन वो कोई भौतिक शरीर नहीं है. That Krishna appeared in the mind of Vasudeva, and then he transferred to the womb of Devaki without any seminal discharge. In other words, भागवत में ऐसा लिखा है कि सबसे पहले कृष्ण जो है वो वसुदेव के मन में प्रकट होता है, तो उस मन से जो है देवकी के मन में जाकर फिर गर्भ में जाते हैं. The Christians call this immaculate conception because they are, in Christian lore, Christ appears in a similar way. Christ appears similar. They call it virgin immaculate conception, meaning without sex. So they know partially that Christ was a yogi, but that's as far as they can go. तो इसको मतलब ऐसे संबंध जो कि यौन संबंध से जो है वो संतान उत्पन्न नहीं हुए, जैसे क्रिश्चियन ईसाई धर्म में हम देखते हैं जो ईसा मसीह हैं उनका भी जन्म जो है ऐसे यौन संबंध से नहीं हुआ था. वो भी जो है अपनी माता के घर में आए थे बिना यौन क्रिया से. So on this auspicious day, we will hear something more about the rasa of Krishna, of Dwarka and Rukmini Devi. तो हम जो हैं आज शुभ अवसर पे ज़्यादा श्रवण करेंगे रुक्मिणी जी और कृष्ण का जो बीच में मधुर रस में संबंध था द्वारका में. Third verse. Krishna says, talking about Rukmini, she has dedicated herself exclusively to me, and her beauty is flawless. तो तीसरे श्लोक में third verse. भगवान कह रहे हैं कि रुक्मिणी जी के बारे में कह रहे हैं कि वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है. I will bring her here after thrashing those worthless kings in battle. मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा. Just as one brings a blazing flame out of firewood. जिस तरह काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है. So, in this way, Krishna is also described as a jackal snatching from other dogs, snatching many. तो ये उसी के समान है जैसे हम देखते हैं कि कुत्तों के युद्ध में लोमड़ी जैसे उनके मुख से मांस छीन लेती है, वैसे भगवान ने जो है रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया. Text number 4. Sri Goswami said, Lord Madhusudan also understood the exact lunar time for Rukmini's wedding. तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मधुसूदन रुक्मिणी के विवाह की सही लग्न का समय भी समझ गए. Thus he told his driver Durga, ready my chariot immediately. अतः उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे दादो मेरा रथ तुरंत तैयार करो. Text 5. Durga brought the Lord's chariot yoked with the horses named Saibya, Sugriva, Megapushpa and Balahaka. दारूक भगवान का रथ ले आया जिसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाक नामक घोड़े जुटे थे. He then stood before Lord Krishna with joined palms. This is Druka. फिर वो दारूक प्रभु अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए.
then in the commentary, the horses are described of Krishna's chariot. Saibya, one of the horses, was green like a parrot's wings. Sugriva is yellow gold. Meghabush was the color of a cloud. And Balahaka is whitish. I don't know if we've seen any paintings where they're these colors. Text 6. White horses are seen. Huh? White can be seen. You've seen? White horses are seen. White. The artists, our artists show them all as white. Here we see Raja Vijayarajika, here we see confidential knowledge that there are other colors besides white. Yeah. White and black can be seen. White and black. 2 colors. Text 6. The Lord mounted his chariot and had the Brahmana do likewise. भगवान शौरी अपने रथ में सवार हुए और फिर ब्राह्मण को चढ़ाया. Remember that the Brahmana had sent the message to Krishna that Rukmini was asking that Krishna kidnap her when she went outside of the city to the Durga temple. तो ये ब्राह्मण हुए थे जो कि रुक्मिणी जी का संदेश लेके आए थे, जिसमें रुक्मिणी ने कहा था कि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि आप मेरा अपहरण कर लीजिए और तब कीजिएगा जब मैं दुर्गा माँ के मंदिर जाऊंगी. So that Brahmana was still with him. तो वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के साथ when he mounted his chariot to go kidnap Rukmini. और वो भगवान के साथ रथ पे चढ़ गए रुक्मिणी जी का अपहरण करने के. So Shukadeva Goswami continues. Then the Lord's swift horses took them from the Anartha district to Vigraha in a single night. तत्पश्चात भगवान के तेज घोड़े एक ही रात में उन्हें अनार्थ जिले से विदर्भ ले गए. I think that district of India is still called Vidarbha, isn't it? That district of India is still called Vidarbha. तो शायद आज भी वो प्रांत का नाम विदर्भ ही है जहाँ रुक्मिणी जी का जन्म हुआ. Anyway, it was quite a long journey, but they in a single night, so night train, so to speak. Sorry? Night train, so to speak. Well, this is 9 horses. So जैसे एक रात की जो है वो रेलगाड़ी पकड़ के हम अपना सफर करते हैं, वैसे भगवान ने रातों रात घोड़ों के माध्यम से जो है वो इतना लंबा सफर तय कर लिया. Mohan Gaudiya is saying that Vidarbha is now called Amravati. I don't know. In India, modern Indian geography, I don't know. He says it's in Maharashtra. It's in Maharashtra? Yes. And the starting point, Anartha district, I don't know what that's referring to. He must have been starting from Dwarka. Yes. So we go to text 7. King Bhishmaka, the father of Rukmini, having succumbed to the sway of affection for his son, was about to give his daughter to Shishupal. Succumb means he was about to give in to the demand of his son Shishupal. As we know, Shishupal was a hardcore demon. कुंडिन के स्वामी राजा भीष्म अपने पुत्र का स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाले थे. So everything was prepared for the marriage of Rukmini and Shishupal. That's what her father wanted. तो राजा ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी. But in a commentary, Sridhar Swami's commentary points out that King Bhishmaka had no particular liking for Shishupal, but rather acted out of attachment for his son Rukmini. See, Rukmini was the bad guy in the story. इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि राजा भीष्म को शिशुपाल से कोई विशेष लगाव नहीं था,
प्रत्युत वे अपने पुत्र रुक्मिणी के प्रति अनुराग वश ऐसा कर रहे थे। इस कहानी में रुक्मिणी जो है वो विलन का रोल प्ले कर रहा है। Text 8 and 9. The king had main avenues, commercial roads and intersections thoroughly cleaned and then sprinkled with water, and he also had the city decorated with triumphant archways and multicolored banners on poles. राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ कराया और तब उन पर जल छिड़काया। All the residents of the city were dressed up in fancy garments and flower garlands and jewels, etc. उसने विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया। नगर के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने और अपने अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया और बहुमूल्य हार, फूल की मालाएं तथा रत्न जड़ित आभूषण धारण किए। So from the 10th verse, I'm just summarizing. The king, according to prescribed rituals, Maharaj Bhishmaka worshipped the forefathers, demigods and brahmanas, feeding them all properly. हे राजन, महाराज भीष्म ने पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनकी विधिवत पूजा की। So then afterwards, the bride and his daughter cleaned her teeth and bathed, and after which she put on the auspicious wedding necklace. तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण करवाया। Then she was adorned with most excellent jeweled ornaments. So, according to Vishwanath Thakur, at a wedding, only brand new fresh clothing should be worn that are fresh from the loom. तो 11वां श्लोक संख्या, दुल्हन ने अपने दांत साफ किए और फिर स्नान किया और इसके बाद उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नए वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित गहनों से सजाया गया। तात्पर्य में श्री कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनके अनुसार मांगलिक उत्सवों पर केवल साफ सुथरे कोरे वस्त्र धारण किए जाने चाहिए। We're going to fast forward. So all the king engaged many brahmanas in chanting proper mantras. The father, the brahmanas, and the father engaged so many brahmanas chanting rituals for the sake of Rukmini, his son. तो राजा ने रुक्मिणी जी के विवाह के लिए और रुक्मिणी की खुशी के लिए जो है अलग-अलग शास्त्रों से मंत्रों का उच्चारण कराया। It was a big occasion. There were elephants, armies of elephants, golden chariots. और बहुत बड़ा उत्सव था जिसमें कई अलग-अलग प्रकार के हाथी, घोड़े सब मौजूद थे। This is in the 15th verse. Numerous cavalry, many horses, and infantry soldiers. तो 15वें श्लोक में बताया कि राजा धर्मकोश में मत तपकाते हाथियों, लटकती सुनहरी सांकलों वाले रथों तथा असंख्य घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ कुंडित का यात्रा की। Salva, of course, Salva is the one who had that magic airplane and attacked Dwarka later. तो जो रुक्मिणी के दोस्त थे जैसे शाल जिसने जो है द्वारका पे आक्रमण किया था उसने Jarasandh and Dandavraka, these were Shishupal's buddies. तो शाल जरासंध दंतवक्र विदुर जो शिशुपाल के समर्थक थे वे सभी पौंड्रक तथा हजारों अन्य राजाओं के साथ आए। And the infamous Pandrak also, another envious demon. तो कुविख्यात पौंड्रक भी वहाँ पर मौजूद था। And thousands of other kings that were in the camp of the same camp as Rukmini, Rukmini's brother. तो उस रुक्मिणी के
के साथ में ऐसे कई हजारों आसुरिक राजा जो है वहाँ पर सम्मिलित हुए थे शादी के लिए। They were all had animosity towards Krishna. तो सबका द्वेष था कृष्ण के प्रति। And of course, Krishna would defeat all of them. और कृष्ण जो है अब सभी के एक ही बारी में सबको परास्त कर देते। So the kings made some decisions. If Krishna comes here with Balaram and other Yadavas, this is the 19th verse, to seal the bride, we shall band together and fight him. तो 19वें श्लोक में ऐसा वर्णन है, शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ऐश्वर्य से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर ही निश्चय किया, ये कृष्ण यदि बलराम तथा अन्य यदुओं के साथ दुल्हन का वरण करने यहाँ आता है तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करें। अतः वे शालू राजा अपनी सारी सेना तथा सारे सैन्य वाहन लेकर विवाह में गए। Thus those envious kings went to the wedding with their entire armies and sent a full complement of military conveyances. I mean, in those days meant horses and chariots. अतः वे सब शालू राजा अपनी सारी सेनाएं तथा सारे सैन्य वाहन लेकर विवाह में गए। Now, in the 20th and 21st verse, when Lord Balaram heard about these preparations of the inimical kings, and how Lord Krishna had set off alone to seal the brides, he feared that a fight would ensue. जब बलराम की विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों तथा कृष्ण द्वारा दुल्हन का हरण करने के लिए अकेले ही प्रस्थान किए जाने के बारे में सुना तो उन्हें शंका होने लगी कि कहीं युद्ध ना थम जाए। Immersed in affection for his brother, he hurried to Kundina with a mighty army consisting of infantry, soldiers riding on elephants, horses and chariots. अतः मैं अपने भाई के स्नेह में निमग्न होकर अपनी विशाल सेना के साथ तेजी से कुंडिन के लिए कूच कर गए। Here we have a glimpse into Balaram's Dwarka Rasa with Krishna. Beautiful brother. तो अब हम देखते हैं कैसे बलराम जी जो है वो कृष्ण के द्वारका रस में जो है वो भाग लेते हैं। Rukmini was actually anxiously awaiting the arrival of Krishna, but she became worried when she didn't see the Brahmana. विष्णु की सुप्रिया पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी। In the 23rd verse, alas, my wedding is to take place when the night ends. How unlucky I am. Lotus-eyed Krishna does not come, I don't know why, and even the Brahmana messenger has not yet returned. तो विष्णु की सुप्रिया पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आए हुए नहीं देखा तो उसने इस प्रकार सोचा। राजकुमार रुक्मिणी ने सोचा, हाय, रात भी जाने पर मेरा विवाह होना है, मैं कितनी अभागिनी हूँ। कमल नेत्र कृष्ण अभी भी नहीं आए, मैं नहीं जानती क्यों, यहाँ तक कि ब्राह्मण दूर भी अभी तक नहीं लौटा। So in modern India we see a lot of weddings take place in a late night. I went, a close friend of mine, I went to a wedding in Mumbai, and the marriage ceremony was not performed until around midnight, and of course this is Kali Yuga, so the workers were sleeping on the side and this and that, you know. But the point is, to some degree, and so this was going to be a nighttime wedding, according to what Rukmini is describing here. Early morning. She's saying the next day after the night ends. Well, she doesn't want the next day to come because at night she's saying, my wedding is to take place, oh I see, when the night ends. Yes. So perhaps it is the next day then. So she's in anxiety about this because she's not confident yet because Krishna has shown up and the Brahma messenger hasn't shown up. तो रुक्मिणी जी का जो विवाह अगले दिन शुरू होने को होना था और कृष्ण ब्राह्मण नहीं आए थे, तो रुक्मिणी को चिंता हुई, लेकिन
कलयुग में महाराज कह रहे हैं कि विवाह में जाता हूँ, तो अर्धरात्रि में ही उनका विवाह शुरू होता है। मैं ऐसे विवाह में बम्बई गया और 12 बजे तक जो है वो विवाह कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, तो इनके सब रिश्तेदार अलग अलग कोने के सोफों में जो है सो रहे थे। So she closed her eyes, but she was crying and meditating on Krishna. We're fast forwarding. तो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। Which verse you are? We're fast forwarding. Which verse are you reading from? She closed her eyes. She was crying because she hadn't seen Krishna or the Brahmana yet, and she was worried that the whole thing, that somehow or other Krishna wasn't going to come. तो 26वें श्लोक से महाराज पढ़ रहे हैं कि इस तरह सोच रही तरुण बाला ने, जिसका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, ये सोचकर भी अब भी समय है अपने आश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। Now this is interesting. She's still holding out hope that Krishna is going to come to rescue उनको भी उम्मीद है कि कृष्ण भी आएंगे जरूर। As the bride thus awaited the arrival of Govinda, she felt a twitch in her left eye, arm, and thigh. Text 27. हे राजन, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि उसकी बाई झांग, बाई भुजा तथा बाई आंख फड़क रही है। ये इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटने वाला है। For ladies, it's the twitching on the left side is auspicious. For men, it's on the right side. तो अगर महिलाओं का जो बायां हिस्सा है अगर वो फड़कता है तो एक शुभता का लक्षण है, और आदमियों के लिए दाहिना वाला। So then the Brahmana appeared before Rukmini. तभी वैष्णवतम विद्वान ब्राह्मण कृष्ण के आदेश अनुसार दिव्य राजकुमारी राजमहल के अंतःपुर में आया। Since he was in a very good mood, she understood that Krishna must be coming. और जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को ब्राह्मण को देखा तो समझ गई कृष्ण भी आता है। The king, upon hearing that Krishna and Balaram had come, were eager to witness his daughter's wedding. जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं, तो वह बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त ढूंढे लेकर आगे बढ़ा। They went forth with abundant offerings to greet Krishna and Balaram, with the music resounding. तो राजा ने बाजे गाजे के साथ जो है पर्याप्त मात्रा में भेंट लेकर कृष्ण बलराम का स्वागत करने का। So the generous king, text 34, arranged all kinds of opulent accommodations, and for them and for their armies. उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना एवं अनेक सैनिकों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। Imagine the opulence that, on short notice, they could arrange opulent facilities for whole armies of thousands of men. तो सोचिए कितना ऐश्वर्य होगा कि एक राजा जो है ना सिर्फ कृष्ण बलराम जी के लिए, उनके लाखों करोड़ों सैनिकों के लिए भी जो है सब सुविधा लेकर उनका स्वागत करने का। And he was giving charity to all the kings that assembled. और हम जितने भी वहाँ पर राजा उपस्थित थे, सबको जो है वो दान दक्षिणा दे रहे। When the residents of Vidarbhapura heard that Lord Krishna had come, they all went to see him. जब विदर्भवासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं, तो वे सब उनका दर्शन करने के लिए गए। So they were devotees who were very happy to see Krishna. तो विदर्भवासी बहुत खुश थे भगवान श्री कृष्ण को देखकर। So they were feeling great love for Krishna. और उनको भगवान के बहुत प्रेम अनुभव हो रहा। The opposite of Rukmini, Rukmini's brother. और रुक्मिणी जो रुक्मिणी जी के भाई थे, उनको विपरीत। So Rukmini she went to see the goddess Bhavani, that means Durga. Her brother and girlfriends went. रुक्मिणी जी ने सहेलियों के साथ मंदिर में जाते।
along with huge entourage, courtiers bearing various gifts, offerings. I'm paraphrasing. रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में जाती तो बहुत सारे अलग अलग भेंटे और माता को अर्पित करने के लिए जाती हैं. She was on a palanquin when she was on her way to the deity. There were big entourage, in other words. और एक बहुत बड़ी यात्रा से निकल रही थी. रुक्मिणी जी जो है पालकी में बैठ के जा रही थी माता के मंदिर. Professional singers, musicians, bards. Bards is an old English word, B-A-R-D-S. This is the 43rd verse. Bards means poets, writers, poets. Chroniclers means for newspaper reporters. Newspaper reporters, chroniclers. And heralds means trumpets. तो उस रुक्मिणी जी का जो यात्रा निकल रही थी तो उसमें जो है वो अलग अलग गायक अलग अलग जो है वो संगीत का साथ साथ में ऊंची ध्वनि करते हुए जा रहे हैं. So we are out of time, but in the next chapter, Shukadeva Goswami continues that how all the kings were furious and finding out that Krishna had arrived. They knew he'd come to steal Rukmini. They knew it. That was standard Kshatriya practice to challenge a wedding by stealing the bride. It was very, routine. They went charging to try to kill or capture Krishna, and the Yadavas, seeing that the enemy racing to attack, turned to face him and stood firm, twanging their bows. और ये सब राजा जो है भगवान कृष्ण के पीछे पीछे गए उनका आक्रमण करने के लिए. यदुवंशी जी जो हैं वो भी कृष्ण के साथ चल रहे थे. Then there was a big fight. So निश्चित रूप से बड़ा युद्ध हुआ होगा. But Rukmini was in anxiety, seeing that the Lord's army covered by torrents of arrows. और रुक्मिणी जी की तरफ से जो सेना थी This frightened her because she was covered by Yogamaya, so she was frightened to see. और क्योंकि रुक्मिणी जी योग माया के अंतर्गत थी तो वो ये देखकर भयभीत हुई थी कि कैसे कृष्ण को इतने सारे तीरों से आक्रमण हो रहा. Then Krishna says, he laughs and he says, he assures her, do not be afraid, beauty-eyed one. This enemy force is about to be destroyed by your soldiers. तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का आश्वासन उनको देने लगे कि हे सुंदर नेत्र वाली रुक्मिणी जी आप चिंता मत करें, बड़ी जल्दी अब सब सेना का परास्त हो जाएगा. So we have to stop there. We're out of time. और समय का अभाव है तो हम यहाँ There's विराम देंगे. much more detail given. तो आप सब ये अध्याय 53 और 54 अध्याय पढ़ सकते हैं आज के शुभ तिथि पर. Guru Srila Prabhupada ki jai, Karantara Shima Bhagavatam ki jai, Nitya Gopal